Okay, please introduce yourself. So myself, Dr. Ravipal Singh. I'm basically from district Jammu. I've done my graduation in MBBS, and currently I'm working as a medical officer in a primary healthcare center. And my hobbies are playing and watching football and doing meditation. So, you're already a working doctor. Why do you want to leave your profession and join civil services? So the main inspiration to just shift from my medical career towards civil services it came from a medical profession only, sir. During my medical field visits and while I was working in a peripheral area, I have realized that the most of the people have more issues rather than just medical issues, and their medical issues are also a result of their social conditions, sir. So, being a clinician, I feel very much limited while I'm serving them, sir. So, I believe that getting into civil services, I can serve them in a better way, sir. You mentioned that some of the medical issues that the people are suffering from are because of their social conditions. Uh, can you name some examples? First of all, we don't have adequate sanitation in the nearby area, sir. Apart from that, there is no provision of, I won't say no provision, but in some areas the water is being polluted. So from that, we are getting various bacterial and viral infections, sir. And due to change in the season, sir, in rainy season, sir, we don't have any appropriate health awareness generation. So just like I'm working in a primary healthcare center now, I have seen a surge in the cases of skin infections, sir. So I believe that the social condition, if they are upgraded to such a level, and or automatically their medical like diseases, it will come down, sir. Ravipal, what are hospital acquired infections? So these are basically infections which when the patient is entering the hospital, he or she is not having such infection, but while his course of treatment in the hospital, due to like his low immunity levels because he is already being diseased, and due to improper sanitation and sterilization measures in the hospital itself, he is acquiring the infection, and these are quite dangerous infections. Like most commonly, we have hospital acquired pneumonia, which is mostly drug resistant, sir. And has the government, come up with some initiatives to stop these infections from spreading? So generally, sir, what comes to my mind right now are we are having some bio-based bio-based management rules, sir. Apart from that, we have universal precautions which guide them to us some sterilization and cleanliness measures, sir, in our hospitals. You being an MBBS student, a doctor as well, what do you think about yoga and Ayurveda? Do you think that they can cure any disease? Sir, I won't say they can cure because there are no medical or scientific evidence for most of them. But I believe that they can be complementary to the allopathic medicine, and there could be a concept of integrated medicine, sir. Because the things which Ayurveda and Yoga they create or they generate in our body, sir, it can be via some physical exercise or maybe some meditation things, sir, because I practice meditation. So I believe that although there is no scientific evidence that yoga or these things they can cure such medical conditions, but they are believed, and I personally believe that if they are complemented with allopathic medicine, then the health of the people can be cured or it can be improved to such an extent. You mentioned about having an evidence about a certain cure for a disease. Whenever a drug is launched by these pharmaceutical companies, where does the evidence come from? Who comes up with the data about the impact that the drug is going to create? So
Presently, most of the countries in the world, including India, sir, they are following the guidelines of the US FDA, sir. Any drug which gets into research, sir, it is being adequately researched and tested upon a specific group of individuals by US FDA, sir. If the FDA gives approval and the approval comes and it is followed by our health and family ministry, sir, and after proper checks by our ICMR, sir, then the drug is entered into India pharmaco sir, and after then it is being rolled out into the market, sir. But we have seen instances where people have come on to streets against the US FDA approving a certain drug which was later on proven to be not beneficial for human health, and in fact detrimental for human health, and then US FDA has time and again backtracked on their own approval on a certain drug. What do you think about that? So presently, I am not aware of any such example, but I have seen that Indian drug and chemical ministry, sir, they have banned some drugs, especially the combination drugs, sir, because the science is a thing which is evolving day by day, sir. So there were some things which we didn't know in the past, sir. So if we have the knowledge, the appropriate technology, so we should evolve and we should appropriately change with time, sir. Okay. Recently there was a syrup which was used by certain children, and they died in Jammu Kashmir. It was an FDC. Can you elaborate on that controversy? Yes, sir. Sir, basically, the drug, the cough syrup, it contained, sir, ethylene glycol in excessive amount, sir. So basically, it was in substitute of the simple plain glycol, sir, because it is cheaper and it is easily available. But sir, after like um, moreover, these cough syrups were mostly imported to African countries, sir, and when they were consumed by the especially the children, it caused them acute kidney injury, sir. And from that the controversy started that the that because ethylene glycol is a banned substance, sir, so it was illegal on their part, sir. Okay, and has the government come up with any initiatives to stop these practices, or to stop these incidents to happen in the future? Sir, they have, as health is a state subject, sir. So most of the guidelines of monitoring these things are by specific state government, sir. India's pharmaceutical industry is not where it should have been. What do you understand by that statement? And if it's true, then what are the problems that are faced by India's pharmaceutical industry? So first of all, I agree with you on some extent that India pharmaceutical and industry, sir, it can grow a lot, sir. But still, sir, we are supplying like 20% of the generic drugs of the world, sir, and we have increased our vaccination production to around 45% of the world, sir. So, and along with that, we have various government has launched various steps such as production linked incentive scheme in pharma sector, sir. And sir, the second question, sir, I believe that India can grow, but there are some constraints. First being the supply of APIs, sir, active pharmaceutical ingredients, sir, and more than 70% of them are being imported from China. So it's an big time issue, sir. And secondly, we don't have any proper, or I won't say proper, but any substantial regulatory measures, sir, because we have seen incidences of like tampering of drugs and, sir, the adulteration of drugs, sir, so which needs to be clear upon, sir. Thirdly, sir, there is hardly any emphasis on preventive healthcare in India, sir. Of sir, which is leading to the abuse of the drugs, sir, such as we have seen the abuse of antibiotics in India, sir, which is leading to antibiotic resistance, sir. What percentage of GDP is spent on health sector? The presently it is around 2.1%, contrary to the national health policy target of 2.5%. And what is the global average? So I'm not aware of the fact, sir.
What would be the difference between a drug and a medicine? So, basically, a drug is a chemical substance. It when a drug is used to cure a disease or a cure a particular condition, sir, and it becomes a medicine, sir. So, drug is as per a substance, and medicine is when it generates some positive externalities to the patient, sir. Is diabetes a disease? So certainly, yes, I would agree. And how would you cure that? Sir, there are different types of diabetes, sir. Mainly, there are two types of diabetes, sir. Type 1 and type 2, sir. The type 1, it is the juvenile type of diabetes where there is no insulin production in the our body, sir. The only cure for type 1 is the insulin from outside source, sir, which is insulin injectables. Whereas we have type 2 diabetes, which is basically caused due to insulin resistance, sir. In this kind of disease, the first and foremost treatment is our lifestyle modification, sir. We need to have low carbs diet, and we need to increase our physical activity, sir. Apart from that, there are many other drugs which are known as uh, anti-glycemic drugs, which decrease the glucose level and increase the insulin resistance, sir. All right. We have recently gotten out of a big pandemic. It was once in a century event. Uh, can you tell me how to be prepared for the next pandemic? So first and foremost, we need to, if we have the appropriate time, sir, we need to set up proper health infrastructure, sir, because we have seen how vulnerable we are in terms of health infrastructure, sir. And so, secondly, we are still short of around 400 medical doctors per thousand populations, sir, because as per WHO, it should be 1 is to 1000, and as per PT Yoga, sir, we have 1 is to 1456 doctors, sir. So we need more doctors in our lab, sir. And so secondly, we have around 1 lakh MBBS seats, but the post graduation seats are around only 45,000, sir. So we have that gap of 55,000 specialist doctor in India, sir. And sir, thirdly and important, like I earlier said, that there should be appropriate health information generation, sir, and awareness, so that people should know that how to disease, how to stop the spread of such infection disease, and sir, there should be promotion of health and literacy among the grassroots level and the people, sir. You being a doctor, you must know about the entire pathogenesis of COVID-19. Uh, do you think it was it had a natural cause, or was it somehow used as a biological weapon against the world? It is still a matter of debate, sir, but there are some evidences which like display that it was being developed in a city only, sir, because it was started from Wuhan city, sir. That is being confirmed by WHO recently, sir. And also in Wuhan city, there is an lab which is alleged to be doing some virus research, sir. But still, it is a matter of investigation, and I believe that WHO will do its job and find out the correct reason, sir. What is your personal inclination towards? Do you believe in the lab leak hypothesis or the natural cause hypothesis? So personally, I am tilted towards the natural hypothesis, sir. Uh, you mentioned about the research in Wuhan University. Can you elaborate on the gain of function research? What do you mean by that? I'm not aware of this research, sir. What is your opinion about the big pharma? Big pharma. I'm not aware of this. Okay, no problem. All right. Your name is Ravi Pal. What is the meaning of this name? Sir, basically, Ravi means sun, sir, in Hindi and Punjabi language, sir. And Pal is just a suffix, sir. Given a chance, if you had to take some other name for yourself, what would that be? So I'm very happy with my name, sir. With my parents have given me. Okay, tell me,
Is India going to launch any specific mission to study the sun? Study this one. Sir, as per my knowledge, sir, India is preparing, or India has already done the mission like Aditya L1 mission, sir. It was regarding the study of sun, sir. So Aditya L1 would go into which orbit? So I am not. I can just venture out a guess if you What want. is L1? Sir, it is L1 is Lagrange point of answer. What are Which where sun and moon are equidistant from each other, sir. sun and moon? I'm not aware of the specificality, but it was something about equidistant rings, sir. How many Lagrangian points are there between two bodies of mass? Sir, I'm not aware of the exact facts, sir. Okay, okay, tell me, what amount of water can be used to put out the sun from burning? So, as per my knowledge, sir, I don't think any amount of water can be possible Why? because, sir, because the sir, I believe that the sun's energy, it is continuous energy, sir, and it is a mixture of magnetic, radioactive, and one other form of energy, sir. So I don't think that any amount of water will cool down the sun, sir. So let's assume we have unlimited supply of water and we pour that onto the sun. Uh, do you think the energy emitting from the sun would it come down or would it increase? So I'm not aware of the specificalities of these things, sir. We have sun and moon both having the gravitational pull on the earth, but we always consider that the tides that happen on the earth are because of the moon's gravitational pull. uh, is it such that sun's gravitational pull does not create any tides on earth? No, sir, it creates actually, sir, the resultant the tides are the result of both of the celestial body gravitational effect, sir. But moon being closer to the earth, sir, it has its more effect on the earth, sir. While sun being the farthest, sir, because the gravitational power is inversely related to the distance, sir. Okay, purely from an astronomical perspective, uh, tell me, the planets revolve around what in our solar system? Sir, the planets revolve around the star of our solar system, sir, which is the sun, sir. Are you aware of the concept of Barry Center? No, sir. Dr. Ravipal, you're from Punjab, Yes, sir. and your mother tongue is also Punjabi. Yes, There sir. have been writings, there have been news that Punjabi is now becoming a language of resistance. What do you understand by that? Sir, basically, I believe, sir, I understand by that, sir, because there is continuous. It started from the farmers protesting, sir, which I believe, sir, because, sir, the Punjabis are continuously they are protesting for their rights, sir. They are speaking up about their rights, sir. It started right from 1980, sir, from Anandpur Sahib resolution God, sir, and later on sir, it basically started from 1966 when there was a demand for Punjabi Suba, sir, and after that there has been continuous series of protests for one and another matter, sir, and recently we have seen the farmers protest, sir. So most of there is a connotation that Punjabis are they are resisting against the central laws or maybe the central policies, sir. So that's what I think I take from this, sir. There are some people, some sections of the population in Punjab itself that consider Punjabi to be a Langdi Bhasha. Why is that? So I'm not aware of that fact, sir. Okay. Punjab was the greatest beneficiary of Green Revolution when it was launched. It has also been an industrial powerhouse for some time. Despite all that, there are separatist tendencies in Punjab. What are the reasons for that?
So first of all, I would say that the people are. Sir, give me a second to recall on it, sir. Okay. Yes, sir. So first of all, there are religious reasons to it, sir. People believe that their religion is being undermined because they believe that as per it is written. They don't believe that it is written in Article 25 that Sikhs are comes under Hindu laws and they are a part of Hindu, sir, like Buddhists and Jains, sir, which most of the Sikh population opposes, sir. So the religious reason is unreason, sir. And sir, secondly, there are some regionalistic tendencies as well, sir. Because Punjabi people believe that they are robbed of their lands and sir their proper share of administration and sir because we still don't have our own capital, sir. The Chandigarh, as it was promised in 1972 Anandpur Sahib Accord, sir, it is not the capital of solely of Punjab, sir. And sir, thirdly, I believe that there is an due to farmers stress, sir, in present decade or last decade, sir, the people are being frustrated, and so they are taking this route, sir. Prime Minister, after taking back the farm laws, he made a very important statement that हम अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाए कि ये फार्म लॉज उनके लिए बेहतर थे. So my question to you would be, if the farm laws were better for the farmers, then why was there resistance? सर, पहली बात तो ये है जो उनका पहला ग्रीवेंस था सर कि हमें प्रॉपर टेबल पर लेके बिकॉज़ सर पंजाब प्रोड्यूसेस मोर देन 60% ऑफ द ग्रेन ऑफ इंडिया सर एज़ वी से कंबाइंड पंजाब एंड हरियाणा बेल्ट सर। तो सर जो भी डिसीज़न अगर कोई लॉ पास करना चाहिए था तो उनको टेबल पे लेके उनका कंसेंसस लेके ही होना चाहिए था सर बिकॉज़ इट वुड अफेक्ट देम लार्जली सर। not only in economical sense but in social sense as well sir and sir उसके बाद सर जब ये बिल पास हुआ था सर तो there were demands that it should be sent to parliamentary committee like most of the controversial bills are sir and sir ये कोई parliamentary committee को review के लिए send नहीं किया गया था sir and there are allegation as well sir they get राज्यसभा में सर जिसे वॉइस वोट से पास हुआ था सर तब कि देयर वर डिमांड्स टू गेट रिटन और सेपरेट वोटिंग सिस्टम एज वेल सर। तो आपको क्या लगता है, फार्म लॉज को लाने का रैशनल क्या था गवर्नमेंट का? सर रैशनल मेन ये था कि जो मिडल मैन है जो अभी भी जो आई बिलीव के जो फार्मर की असली प्रोड्यूस उसको मिल नहीं पाती अभी भी उसके मिडल मैन की वजह से सर मिल नहीं पाती। हम लोकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं सर आड़तियाज। तो सर उसमें उसको जो 50 टू 60% जो उसका प्रोड्यूस का मनी होता है सर वो मिडल मैन के पास चला जाता है सर। तो सर बेसिकली वो मिडल मैन को खत्म करने के लिए ये लॉ लेके आए थे सर। But due to miscommunication and the reason I have mentioned foremost, sir, the bill could not become a reality. But still, sir, the work is going on and the discussions are going on between the farm organization and the center, sir. So hopefully, we will get a positive outcome. When the farmer comes up with the produce, he can only go to the APMC mandis to sell his produce, and we have seen that APMC mandis are suffering from a lot of issues. Can you enumerate some of them? First of all, foremost are the infrastructural concerns, sir. The infrastructure of the APSC fund is not at par and not as per required, sir. And sir, secondly, there are many bureaucratic hurdles, sir, which delays the sale of the like wheat or paddy or any substance under MSP, sir. So they are so the crops are kept lying vacant and they get distorted or they get stale. And so apart from that, there are like I mentioned, there is problem of middlemen, sir, which are they have actually captured the APMC money, sir. Okay, government also provides MSP on a lot of crops. How many crops does the government provide MSP on? Sir, there are 22 crops, sir.
And is sugarcane part of it? Uh, this, no, sir. Sir, it is a part of FRP regime, sir. So how does the government calculate MSP on a crop? Sir, there are around 5 to 6 factors, sir. I can recall only a few right now, sir. One is this, sir, the amount of. Uh, I'm sorry, sir. I would like to correct myself, sir. It is the formalized, sir. Uh, uh, sir, the cost of the land, sir, and the imputed cost of the family labor, sir, and it is multiplied by 1 into 5, sir. What was the recommendation of the Swaminathan committee? सर इट बेसिकली सर उन्होंने बोला था कि जो लैंड का रेंट है जो अगर वो इसको फार्म में नहीं यूज करेंगे किसी और को रेंट में देंगे उसका भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड करना चाहिए सर देखिए, एमएसपी पर आपको प्रोक्योरमेंट करना है, ये गवर्नमेंट की गारंटी है, पर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि एफसीआई प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहा है और उनके पास फंड्स नहीं है। तो जब आपके पास फंड्स नहीं है तो प्रोक्योरमेंट कैसे होती है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट डिटेल सर Are you aware of the concept of extra budgetary resources? यस सर What's that? हेलो सर सर ये सर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं सर ये गवर्नमेंट के जो अकाउंट होता है फिजिकल डेफिसिट का सर और बोरोइंग का सर ये उसमें नहीं आते ये गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली बोरो नहीं करती सर ये एफसी अपने बिहाफ पे मनी जो स्पेंड करती है सर इसके ऊपर So is EBR part of the total public debt of the government? नो सर आप पंजाब में हैं अभी या जम्मू में हैं? कहाँ पे हैं आप? सर आई एम करंटली लिविंग इन अमृतसर सर अभी आप अमृतसर में हैं। Okay. So when are you planning to come to Srinagar? सर ऑन 18th Okay, tell me what are the environmental concerns that the people are facing in Amritsar? So first of all, I would say that the temperature of Amritsar is of extreme type of climate, sir. In all of the Punjab region, sir, due to its location in the northwestern part, sir, it faces the most of the heat, sir, and it is the most chilliest place in Punjab, sir, as per the record, sir. And apart from that, sir, you're asking about the environmental hazards. Yes. Sir, sir, presently we are being faced with some amounts of flood, sir, in some parts of Amritsar, sir. Apart from that, sir, like we have seen a trend in the country, there is a trend of deforestation in Amritsar as well, sir. There is no forest alive in Amritsar right now, sir. And sir, other environmental hazards, sir. We have recently the some of the factories like alcohol making factories are being set up, sir, which are alleged to be polluting the rivers side by side. You mentioned water. There have been news that groundwater will get exhausted by 2029 in Punjab up to 100 meters. Uh, what is the government doing for that? Sir, there are many initiatives which is being taken both by central government and the state government, sir. I would start by state government initiative, sir. Sir, presently the government has they are encouraging people to diversify their crops, sir, to transform the pattern from water intensive crops to other crops, sir. Recently, we have started MSP for moong dal, sir. So because it is not very water intensive, sir. And sir, secondly, presently the canal system in Punjab is also being made operative, sir. So there is minimal use of groundwater for irrigation purpose, sir. And sir, thirdly, the government has now notified the time for sowing of paddy, sir, so that it is in resonance with the monsoon rain, sir. So the rules are being followed on ground, which I have seen, sir. And if we see on the central part, sir, there are many schemes such as we have, sir, Pujal Yojnas, sir.
and sir, there is other groundwater replenishment programs which are being conducted. What are your hobbies? They are it is playing and watching football and doing meditation, sir. Football. Do you watch English Premier League? How many teams compete in English Premier League? Sir, 20 teams. And which one is your favorite? It is Manchester City presently. What is the nickname of Man City? Sir, there are many nicknames, sir. One is the Blues, and one is the City, and you can call it by any other name, sir. Okay, who's the majority shareholder of Manchester City? Who owns it? So I don't know the name of the owner, but it is owned by a Saudi Arabia businessman, sir. What do you think about these big footballers now moving away from the English Premier League and joining some new football clubs in the Middle East? Don't you think it's part of the sports washing done by these Middle Eastern countries? नहीं सर ऐसा तो नहीं सर मैं कह सकता बिकॉज सर द प्लेयर्स आर बीइंग पेड वेल एंड वो सर अपनी खुशी से इस साइड आ रहे हैं सर और सर मोस्टली जो प्लेयर्स अपने करियर के एंड में होते हैं सर अबाउट 30 ईयर्स सर वो ही इस साइड आ रहे हैं सर और ये ट्रेंड सर अभी का नहीं है सर ये पहले क्या होता था पहले जो ये सारे प्लेयर्स होते थे अबाउट 30 दे टेंड टू मूव टू USA, sir. Like we have seen David Beckham, he moved to Miami FC, sir. And some of the stars have moved to China Football League as well, sir. Such as Andreas Iniesta, sir. तो सर ये अपनी हर कंट्री की लीग का होता है सर अच्छे अच्छे प्लेयर को अट्रैक्ट करना और अपनी स्पोर्ट्स इकोनॉमी को और इंक्रीज करना सर Okay. Who's your favorite footballer? सर लियोनेल मेसी Messi. यस सर Why? सर आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ प्लेइंग सर and he is the best player I believe in the planet has produced so far, sir. Dr. Ravipal, what is your family background? So my father has retired from the post of senior manager in Jammu and Kashmir Bank, and my mother is retired principal from a government school, sir. Okay, tell me, what has the government done to reduce the problem of NPAs in the banking sector? So first of all, they have launched like insolvency and bankruptcy code, sir, and apart from that, sir, they have launched various plan and schemes by finance ministry as well, sir. One of them is the Shashakt plan, sir. Apart from that, sir, to increase the financial health of the banks, sir, recapitalization of banks is being done to decrease the ratio of gross NPAs, sir. And sir, we have the I'm just skipping the name, sir. There were some strict regulatory measures on the banks, and sir, we are currently being following the ICAR ratios of the banks, sir, which allows them to have specific funds. The specific, I'm not able to recall the correct Okay, no, terminologies. you mentioned IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. Uh, the resolution under Insolvency and Bankruptcy Code has to be finished under how many days? Sir, earlier it was 180 days, sir, but in COVID-19 the period has been extended, sir. It can go beyond 180 days. Okay. You mentioned gross NPA. Can you give me a difference between gross NPA and net NPA? Yes, sir. सर क्रॉस एनपीए जो सर होता है सर सर वो सर जो हमारा डेप्ट दिया हुआ होता है सर उसको हम एसेट्स में जो हम कंसीडर करते हैं अगर हम उसको भी अपने एसेट्स में कंसीडर करके उसका रेशो बनाएं टू द टोटल फंड्स अवेलेबल टू द टोटल इवन सर तो वो क्रॉस एनपी आता है सर What do you understand by net NPA? सर जो
प्रेजेंटली जो बैंक्स के पास फंड होते हैं और कितना एंड किया होता है, जो लायबिलिटीज होती हैं सर, उसको निकाल के वो पैटर्न पे होगा। आई एम नॉट श्योर राइट Okay, नाउ सर। okay, no problem. What is banking ombudsman? सर ये आरबीआई ने सर स्टार्ट किया है बैंकिंग ombudsman सर। इट इज बेसिकली meant टू hear the complaints of the people regarding the banking operation sir. Okay, and is there any threshold up to which the complaints can be heard? Sir, I'm not aware. I guess it's around 1 crore. Okay, tell me, what is the money multiplier effect? सर मनी मल्टीप्लायर सर, इट इज बेसिकली सर कितना पैसा हम जो एक बैंक में अगर हम सेव करते हैं सर, तो बैंक उसका सीआरआर एसएलआर काट के उसको आगे लोन में सर देता है। तो सर वो जितनी टाइम फोन में आ जाके मल्टीप्लाई हो पाएगा सर, उतनी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी सर। आपने CRR SLR को मेंशन किया, हैव यू हर्ड अबाउट ICRR? ICRR, I'm not able to recall it right now sir. Okay, no problem. Okay, Ravipal, tell me 3 of your biggest weaknesses. So biggest weaknesses sir. Sir, I have never counted my weaknesses sir, as per se. Is there anything that you want to change about yourself? Sir, I need to be more extrovert in some conditions sir. That's what I believe sir. It may help me. So you think that you are introvert in some circumstances? Yes, only in some So circumstances. wouldn't that be a weakness? No sir, I won't consider it as a weakness sir, because it is just a quality of me sir। ये मेरी अपनी quality है sir। इसका कभी it can be beneficial to me as well in some cases sir, so I won't count it as a weakness. Okay, share, as you're a doctor as well, you're currently working as a medical officer. Share some interesting experience that has happened to you in recent times. Sir, I won't say it is a interesting in a good sense sir, but right now I'm working in a peripheral area sir, and sir I have seen that like we discussed about diabetes sir, the people having there's a test name HbA1c of diabetes sir, the कंडीशन सर इतनी ग्रेव है सर रूरल एरिया में सर कि उनको हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं है सर। लोगों को उनका HbA1c 10 से ऊपर 11 12 13 पहुंच चुका है सर, जो कि इट शुड बी बिलो 6.5 सर। और सर सम ऑफ द पेशेंट सर पता नहीं कैसे आते हैं, उनकी जो रैंडम ब्लड शुगर होती है वो 400 500 होती है, एंड आई डोंट नो हाउ दे आर स्टैंडिंग, दे आर सर्वाइविंग, दे फील वेरी गुड सर। पता नहीं कि उनकी इम्यूनिटी है या उनको कुछ मिला हुआ है। लाइक आई हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल सर। तो प्राइवेट सेक्टर में सर जो 400 500 शुगर के साथ पेशेंट आता था वो बेड पे ही आता था सर। मगर मैंने यहाँ पर मैंने देखा कि वो पेशेंट देखने कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है सर, जब उनकी शुगर देखते हैं तो 400 500 होती है और उनको कोई सिम्टम कोई कुछ नहीं होता सर। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो होना चाहिए। सर सैंडविच से एक तो है सर उनकी सर जो विल पावर कह लीजिए, एक सर दे आर यूज्ड टू सर। जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को सर यूज्ड टू हो जाती है तो सर उसका जो रिसेप्शन सर हमें होती है, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, जैसे आई विल से दैट हाई ब्लड शुगर रिसेप्टर जो एक्ट करते हैं, उनकी सर सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है सर। तो जैसे मेरी अगर शुगर 400 होगी तो मेरे रिसेप्टर इतने एक्टिव हैं कि मुझे उसी टाइम वो अलर्ट कर देंगे और मुझे वो उस चीज़ के अच्छे से सिम्टम आ जाएंगे सर। उनको सर विद टाइम पहले एक बार होते हैं, वो उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में बने हुए हैं हमें सिग्नल करने के लिए कि अंदर कुछ खराब है सर, वो उनके जो उसकी सेंसिटिविटी वो कम हो जाती है सर। इसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म डैमेज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और इंक्रीज हो जाती है सर। माइक्रोबायोटा का कोई रोल होगा उसमें? आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टर्म सर। There's a program recently done by the government of India
is India's Human Microbiome Initiative. Yes, sir. Have you heard about that? Yes, sir. What's that? Sir, it is basically to map and identify all the genes and all the pair of uh, nucleic acid, which is DNA, in our human body, sir. Please repeat that. सर जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो जितने भी डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं सर, वो तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है. There is Genome India project. This is a separate project by the name of Human Microbiome Initiative. आई एम नॉट अवेयर ऑफ Okay. दैट इनिशिएटिव राइट नाउ सर. आई विल brush upon on You that. did mention that you also have gotten first prize in comedy skills. Is that right? Okay. So आप सबसे अच्छी मिमिक्री किनकी करते हैं? सर मैं मिमिक्री नहीं करता सर, मैं वैसे स्टैंड अप स्टैंड अप करते जोक्स हैं. वगैरह सर मैंने किया था सर. तो हमें एक जोक बताइए. सर जोक सर, ओके, आई नीड टू रिकॉल वन. सर एक बारी आई वुड इन हिंदी सर, एक बारी एक हस्बैंड और वाइफ सर, वो दोनों दे गेट टेंस्ड बिकॉज जो हस्बैंड होता है सर उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है सर. तो वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको उनको बोल देता है कि ही वॉन्ट स्टे मोर देन 4 or 5 hours सर. हिज हार्ट इज डैमेज एंड इट्स ब्लॉक्ड एंड ही वांट्स सी द टुमारोज मॉर्निंग. देयर इज नो चांस दैट ही कैन लिव. तो सर वो घर आ जाते हैं सर दोनों, वो खाना खुना खाते हैं अच्छे से सर. वो जब सोने लगते हैं खाना खा के, तो सर वो दोनों गाने जो होते हैं सर, वो रात को बातें करते होते हैं. तो 1 बज जाता है, 1 बज जाता है, तो अचानक से जो वाइफ होती है वो सो जाती है सर. तो जो हस्बैंड होता है वो उसको पूछता है तू सो गई है? तो आगे से वो बोलती है कि हाँ आपने तो उठना नहीं, सुबह मैंने तो उठना है ना. All right. ठीक है. Let's conclude the session. Ravipal, you can relax now. Tell me, आपका इंटरव्यू कैसा लगा आपको? सर एक्चुअली मैंने सर जितनी बार भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं, मैंने एक यूपीएससी का दिया हुआ सर इंटरव्यू, और लास्ट टाइम मैंने केएस का भी इंटरव्यू दिया हुआ सर. तो सर जो मेरे इंटरव्यू होते हैं वो मोस्टली, और आई वुड से 80 to 90% वो सारे मेडिकल के ऊपर ही सर होते हैं. घूम फिर के वो सर मेडिकल के ऊपर ही आते हैं सर. तो आपने सर, क्योंकि मैं एक्चुअली तो मैं इस प्रिपरेशन में हूँ पिछले 4-5 साल से सर. मैंने यूपीएससी के 2-3 पेन्स लिखे हैं, और मुझे जो फैक्ट्स हैं सारे, ये आईबीसी वगैरह, ये आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, सारा कुछ सर ये सर मुझे आता सब है अच्छे से. पर अब मैं अभी 3-4 महीने से मैं उस मोड में हूँ नहीं सर. अब मैं जॉब वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि किसी कोई टाइम था ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आती थी, मेरे टिप्स भी होती थी हर चीज़. तो ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना देना सर केएस का. अगर हो गया तो मैंने मेंस भी कोई अच्छे से मैंने दे दिया था, कि अगर इस बार मैंने पूरा स्ट्रेस फ्री होकर दिया सर मैंने मेंस. क्योंकि पिछली बार मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा हो जाएगा केएस, क्योंकि मैंने यूपीएस का मेंस पिछली बार क्लियर किया था. तो मुझे था कि मेरा केएस हो जाएगा, क्योंकि इतना होना चाहिए मेरा. पर पता नहीं जीएस2 में लोगों को 170 मिले हैं, तो मुझे नहीं पता वो कैसे. और ऑप्शनल मेरे मेडिकल साइंस है, उसमें इतने मार्क्स हमें मिलते नहीं. मेरे से 270 थे, और इंटरव्यू में आई स्कोर 160. कितने मार्क्स से रह गए थे आप लास्ट ईयर? सर सर 25 मार्क्स. ओके. हाँ जी सर. तो सर उसमें सर मुझे था कि अभी जैसे आपने मुझे जो बेसिक हमारा मेंस का सिलेबस होता है, या उसका प्रीलिम होता है सर, उसमें चीज़ें पूछ ली हैं. तो सर वो मैं सर इस हिसाब से मुझे आंसर करनी चाहिए, इतनी वो प्रोफिशिएंसी के साथ वो मैं नहीं कर पाया सर. तो वो भी मेरे पास 1 हफ्ता है, अगर उसको मैं अच्छे से कर लूँगा सर यार, उसका कोई इश्यू नहीं है. उसके बाद सर एक मेरा सर जो आपको पता लगा कि मेरा स्टैमरिंग का सर इश्यू है. सर उसका सर मुझे थोड़ा होता है कि उसकी वजह से मेरे मार्क्स या कुछ कट होंगे, बिकॉज़ दे वुड ट्रीट मी एज़ सम अंडर कॉन्फिडेंट गाय सर. आई डोंट थिंक दैट वुड बी एन इशू. स्टैमरिंग का अगर इफ इट इज एविडेंट देन
इट माइट इवन टर्न पॉजिटिव फॉर यू। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई ऐसा इशू होगा, बट सर आपको सर मेरी जैसे मैंने आपको कम्युनिकेट किया सर अपनी हर चीज़, तो आपको कि मैं एज़ अ डॉक्टर भी मैं सर पेशेंट मैं देखता हूँ, मैं लोगों को भी करता हूँ सर ट्रीट। सर उसमें कई बार क्या होता है कि कोई आदमी मेरे ऊपर अगर कोई स्टैमर कर रहा है ना, तो सर मैं बीइंग ऑन द ऑब्जर्वर साइड सर मुझे इतना अच्छा फ़ील नहीं होता, बिकॉज़ मुझे होता है कि जैसे अंदर से भी क्यों कर रहा है, ये अच्छे से क्यों नहीं मेरे से बोल रहा, मुझे इसकी बात अच्छे से समझ नहीं आ रही। सर वो ऐसा एक ऑब्जर्वर को होता है, इंटरव्यूअर को। आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ आपके साथ। नो डाउट आई कुड अंडरस्टैंड कि यू हैव एन इशू ऑफ स्टैमरिंग, बट आई वाज लाइक परफेक्टली फाइन विद दैट, एज लॉन्ग एज अगर आपको जवाब है आपके पास, उसमें अगर आपको एक नॉर्मल इंसान अगर 10 सेकंड में जवाब दे रहा है, आपको अगर 15 सेकंड लग रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके पास जवाब है। तो आई डोंट फील कि मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट आई वाज मोर इनटू गिविंग यू द टाइम टू रिप्लाई, ठीक है ना। सो आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू विद दैट। कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ा गौर करें। यस सर, जस्ट अ मिनट सर। Yeah, I will take out my copy and pen. Yes, sir. Ravipal, first of all, this is you are the फिफ्थ और सिक्स्थ कैंडिडेट जिनका मैंने मेडिकल में इंटरव्यू किया। अभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेडिकल से ऑप्शनल भी रखा है और उन्होंने क्वालिफाई भी किया मेंस, अभी उनका इंटरव्यू भी है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपका पूरा इंटरव्यू मेडिकल पे चले, बिकॉज इट मे बी सच कि द बोर्ड जिनके पास आप बैठेंगे उन्होंने ऑलरेडी एक दो बच्चों का, तीन बच्चों का, चार बच्चों का मेडिकल में कर लिया हो इंटरव्यू, एंड देन दे माइट शिफ्ट टू सम अदर टॉपिक्स एज वेल। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, मेडिकल वाला तो आपने करना ही करना है, उसमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बट यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। प्राइमरली दोज कॉन्सेप्ट्स जो आप ही लीड कर रहे हैं, जिनको आप ही लीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, I went into banking sector. Why? Because you mentioned that your father is from the banking sector, right? So I went into IBC. Why? Because you mentioned as an IBC as the government initiative. I went into ICRR. Why? Because you mentioned CRR and SLR. So you were leading the interview and you need to be very confident of the facts कि जो मैं उनको लीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो कॉन्सेप्ट कम से कम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो you don't have to lead there. तो हम शुरू करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन इज एप्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैड अ पर्सनल स्टोरी कि जब मैंने आपको पूछा वाई सिविल सर्विसेज, तो आपने कहा मेडिकल में आपने काम किया है और आपको पता चल गया कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर बियॉन्ड मेडिसिन, और जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर का काफ़ी रोल है। देन आई आस्क्ड यू मेड अ स्पेसिफिक पॉइंट वेयर इन यू सेड दैट मेडिकल इशू, देयर आर सम मेडिकल इशूज बिकॉज ऑफ सम सोशल कंडीशंस, wherein I asked you कि बताइए कौन सा मेडिकल इशू है। You talked about sanitation and awareness and all that, but you did not give me a medical disease. ठीक है, I was specifically asking for a medical disease that is because of a social condition. तो वो आपने वहां पर एक मेडिकल डिजीज बोलना था। Fine, that was one point. Then I asked you about hospital acquired infections. आपने you knew that already. Yoga, Ayurved पे you had a brilliant answer. US FDA पे शायद आपने you get go to the Google, वहाँ पर थोड़ा रिसर्च कीजिए। There have been innumerous protests. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो FDA ने अप्रूव करे थे, MNCs के प्रोडक्ट्स, बट दे लेटर ऑन बिकेम वेरी detrimental for women health. तो वो था। कफ सिरप का you already had the knowledge, that was good. India's pharmaceutical industry, drug versus medicine, diabetes, you knew that everything. उसके बाद मैंने पैंडेमिक पे आपको क्वेश्चन पूछा, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द पैंडेमिक। दैट वाज गुड व्हेन यू आंसर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, जहां पर आपने बोला फर्स्ट वुड बी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यू ऑलवेज हैव टू कम अप विद दीज नंबर्स। तो व्हाट यू हैव टू से, या सर ऐसे सर मुझे पूरा पता है कि ऐसे इंटरव्यू देना है, ऐसे फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली करना है, मगर सर मैंने ये पूछना है सर, अभी मेरे पास लगभग 5-6 डेज़ का टाइम है सर। जब मैं आंसर अपने प्रिपेयर करता हूँ ना सर, तो मैं ऐसे ही करता हूँ सर प्रिपेयर कि हेल्थ में क्या इश्यूज़ हैं, लाइक प्रिवेंटिव में क्या-क्या इश्यू, फर्स्टली वी विल डू दिस, सेकंडली वी विल डू दिस। मैं नीचे से लेके ऊपर तक सर मैं आता हूँ, ग्रास रूट से लेके स्टेट स्टेट ऐसा मैं सर चाहता हूँ। मगर सर जब बोलने की बारी आती है सर, तो सर वो कभी-कभी हो जाता है सर कि मैं ऐसा नहीं आंसर दे पाता, क्वेश्चन ऐसा होता है थोड़ा बहुत। उसका मेरा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, उसको मैं
प्रैक्टिस से करूँ कि उसका मैं कोई माइंडसेट ऐसा हर क्वेश्चन का मैं उसको लेके आऊँ कि ऐसा आंसर मेरे से दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे करना है सर, मगर हो नहीं पा रहा वो। देखिए इसका एक सिंपल तरीका है, जैसे ही आपने क्वेश्चन सुना, अब आपको पता है इसका आंसर, पता है, उसको बस फ्रेम करना है। एंड यू आस्क देम, सर कैन आई टेक अ मोमेंट? तो आप एक मोमेंट ले लीजिए, यू विल गेट सम 4-5 सेकेंड्स। तो उस 5 सेकेंड में जस्ट कम अप विद दोज डायमेंशन, जैसे आपने अभी कहा सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल, यू कैन ऑल्सो कम अप विद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे डायमेंशंस वो आपने एज पर क्वेश्चन डिमांड होगा। हाँ क्रिएट करिए। और वहीं आप कम से कम 3-4 डायमेंशन निकालकर फिर आप बताइए, सर देर आर 3 मेजर फैक्टर्स, देर आर 5 मेजर फैक्टर्स, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। यू टेक अ पॉज एंड देन कम अप विद दोज फैक्टर्स। और आई डोंट थिंक कि व्हेन यू, बिकॉज यू सेइंग दैट यू ऑलरेडी नो इट, बट आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, सो यू जस्ट हैव टू टेक अ पॉज, आपको वो स्ट्रक्चर आ जाएगा उसी वक्त। ओके सर, आई गॉट अ पॉइंट। या उसके बाद ये आई आस्क्ड यू अबाउट गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन यही होता है जब वायरोलॉजी में you add some specific strains to a virus to make it more potent. So that was what the research was all about on coronaviruses in Wuhan University. They were making it more potent so that to understand how to fight it later on. फिर हम आए द सन पे। आपका नाम का मतलब सन है, तो सन के रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। आदित्य L1 क्या है? L1 लग्रांजे पॉइंट्स दो बॉडीज के बीच में 5 जगह पर होते हैं। तो वो क्या है सिस्टम? ऐसा सिस्टम है जहाँ ग्रेविटेशनल पुल आपका स्टेबलाइज हो जाता है। फिर मैंने आपको पूछा वाटर एंड सन वाला, दैट वाज अ क्वेश्चन जहाँ पर यू नो इफ यू ऐड मोर वाटर टू द सन, वहाँ पर सन में देयर इज नो केमिकल कंबशन दैट इज हैपनिंग, सन में देयर इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज हैपनिंग। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ग्रेविटेशनल एक्सर्शन से, और ग्रेविटेशन आएगा जितना मैसिव बॉडी होगी। और अगर आपने पानी डाल दिया सन के ऊपर, इट विल बिकम मोर मैसिव, it will create more gravitation, it will create more fusion, so that would increase the thing from the sun. So वो था। पंजाबी के रिलेटेड है गुड आंसर। फार्मर डिस्ट्रेस पे एक चीज वहां मैंने ऑब्जर्व किया दैट इफ आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन इन हिंदी, then you are trying to answer in Hindi, then the second time I asked a question in English, then you again tried to answer in Hindi. So you have to remember that you always have to follow the questioner's language. So if I'm asking in English, you have to answer in English. If I'm asking in Hindi, you have to answer in Hindi. Then we went to APMC and Mandis and MSP. You already know that. You give a wrong answer regarding extra budgetary resources. Extra budgetary resources are not part of fiscal deficit, but they are part of public debt. पब्लिक डेट मुझे उस टाइम पे सर आइडिया हो गया था कि पब्लिक एफ्ट में एफटी में नहीं है। उसके बाद अमृतसर पे बात की हमने, आपने बताया कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन का है, पानी का मसला है, ड्रॉट्स का इशू है, टेम्परेचर का इशू है, वो ठीक था। फुटबॉल पे बात की, आपने पता था। मैनचेस्टर सिटी का निकनेम द सिटीजंस है, हर एक क्लब का अपना अपना निकनेम है, तो उनको हम सर एक्चुअली मैं एक्चुअली प्लेयर हूँ, मैंने नेशनल तक सर मैंने खेला हुआ है फुटबॉल सर, तो मैं ज्यादा खेलने में सर मेरा बिलीव है। देखता हूँ पिछले 3-4 साल से स्टडीज में आके मैंने सर देखना मैंने थोड़ा, क्योंकि आपने मेंशन किया ना वॉचिंग फुटबॉल, तो आपको तैयार तो करना पड़ेगा वो। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। देन फिर बैंकिंग पे हम चले गए। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस एनपीए आपका टोटल एनपीए होता है, उसको माइनस करेंगे हम प्रोविजनिंग जो बैंक को रखना पड़ता है, तो ग्रॉस एनपीए से माइनस पी करके वो नेट एनपीए बन जाता है। ICRR was a reserve ratio that was maintained during the demonetization. I got सर, वो लिक्विडिटी के लिए किया था सर। Exactly. देखिए देन देयर वाज दिस क्वेश्चन। अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं पता है, इट्स फाइन। मैंने आपको पूछा आईबीसी कितने टाइम में होता है, आपने बोला यू डोंट रिमेंबर, तो फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है जब आपके सिचुएशनल या कोई ऐसा पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, वहां पर गलती नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, I asked you about your 3 weaknesses. Now you said I have never counted my weaknesses. You might not have counted your weaknesses, but you have to give your weaknesses. आप इंट्रोवर्ट है, आप बता सकते हैं मेरी वीकनेस है। आप बता सकते हैं कि सर आई स्टैमर अ बिट, तो दैट इज अ फाइन वीकनेस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद अ कैरेक्टर। आप बता सकते हैं सर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, आई एम मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द वर्क, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप बता सकते हैं आई एम अ लिटिल फूडी, मैं खाना ज्यादा पसंद करता हूँ,
और दैट इज ऑल्सो अ गुड वीकनेस टू हैव, ठीक है ना। ये सारी, या यू कैन से समटाइम्स यू स्पीक अ लिटिल फास्ट, तो ये छोटी छोटी वीकनेसेस, सटल सी वीकनेसेस आपको बतानी चाहिए अपने बारे में। दैट टेल्स अबाउट योरसेल्फ कि आपको अपने बारे में पता है चीजें, because you already said that you would want to change your introvertness, that is the thing that you want to change in yourself, that means you are introvert, तो उसको एक वीकनेस बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट शोज ह्यूमिलिटी कि आपको अपने बारे में पता है, बट नेवर कम अप विद अ वीकनेस विच इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर के रिलेटेड वीकनेस नहीं बतानी है। देन आई आस्क यू अबाउट अ जोक, वो भी आपने अच्छे से हैंडल किया। एक चीज है जहां पर मुझे लगा कि आप उसको बेहतर कर सकते थे, दैट वाज रिगार्डिंग योर फेवरेट फुटबॉलर। नाउ सी द क्वेश्चन व्हेन दे आस्क यू समथिंग लाइक दैट कि फेवरेट फुटबॉलर, फेवरेट सिंगर, फेवरेट कॉमेडियन, you don't have to only talk about the style and the technique of the player. He is not even concerned about Messi. उनको क्या मिलेगा, मेसी, आपने मेसी का नाम बता दिया तो they'll not get anything. What they want to see is आपकी नजर किस पे जाती है। आपने जब मेसी का नाम बताया तो मैंने आपको पूछा क्यों, तो यू एक्चुअली वर ट्राइंग टू से अबाउट हिज स्टाइल एंड टेक्निक, बट दैट्स नॉट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बताना था इन अ वे दैट, लेट्स सपोज यू सेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो आपको बताना था अगेंस्ट ऑल ऑड्स दैट पर्सन हैज डन वंडर्स फॉर हिमसेल्फ, और उन्हें इतना हार्ड वर्क किया। There was a time when he got the time when he was not performing well, and then he recovered, he struggled and got back again. तो आप ये this thing says something about yourself, that you are inspired by something like that. So whenever you have to mention a favorite player or a favorite person, you always go for the virtues of the person, not precisely the technique and the style. वो भी आप, you can mention one factor, but majorly at the top it has to be a virtue. This was a little feedback from me. Otherwise you're a very wonderful candidate. I believe कि अगर आपका मेंस अच्छा गया है, you have a good chance this year. आपका इस बार भी, because you're a working professional, आपका इस बार भी most of the interview would revolve around medical science only, but you need to be prepared for banking, you need to be prepared for Punjab, you need to be prepared for the sun, the planets, and other issues in the health sector. Okay sir. If you have any questions, you can ask. नहीं सर, अभी मैंने पूछना था कि अभी जैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, अभी जो लास्ट 4-5 डेज है सर, तो उसका मेन जो सही तरीका है वो क्या हो सकता है सर प्रैक्टिस करने का? देखिए, एक तो आपका जो सिलेबस है एमबीबीएस का, वो अच्छे से आप ओवरव्यू ले लो उसका, और सिलेबस में से ऊपर से आप एक रफ अंडरस्टैंडिंग हर चीज की ले लो, सिलेबस के लाइंस की, स्पेसिफिक लाइंस की। सेकेंडली, आपको अपना प्रोफेशन जो है आपका वहां पर, व्हाट अ नॉर्मल पर्सन ऑब्जर्व्स अराउंड हिमसेल्फ, कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, अमृतसर में, पंजाब में, उसके लिंक्ड एरियाज में, जम्मू में, जहाँ पर आपके फादर हैं, फादर थे, और आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सारी चीज़ों के रिलेटेड, उस पर आपका नज़र होना चाहिए। खासकर अभी जो न्यूज़ में हो रहा है पिछले 2-3 महीने, उसके बारे में, फार्म लॉस पर आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके फादर का बैकग्राउंड है तो वहाँ पर उस पर आपको अच्छे से कवर करना है वो, और समथिंग अबाउट योर questions related to weaknesses, strengths, situational questions, why civil services, इनका एक अच्छा सा टेम्पलेट बना लो आप, जिसको आप उधर ही क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकोगे। सो बस ये सारा है, और बाकी मुझे लगता है दिस वुड बी योर इंटरव्यू अराउंड, और आपका फुटबॉल का जो थोड़ा बहुत फैक्चुअल नॉलेज है वो थोड़ा गेन कर लो। वो देखना सर। ठीक है सर। ऑल राइट, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, बाय।